Hidden heaven on earth. Bosnia and Herzegovina is the most underrated country in Europe. Its picturesque scenic towns and villages and serene turquoise waters steal your heart. The country was under the Ottoman rule between 1463 to 1908, which vastly makes up the Muslim culture and which is one of the reasons of the rich Islamic architecture and Turkish-inspired culture, which can be seen and felt throughout. It is one of the richest countries in history, culture, beauty, food and hospitality. Welcome to Bosnia and Herzegovina. Welcome to Bosnia. Welcome to Mostar, guys. Assalamu alaikum, guys. This morning we are in Mostar. Yeah, one of the old frontiers of Ottoman Empire. इस पे 3 एम्पायर्स और 3 और 4 डिफरेंट हुकूमतें हुई हैं और इसलिए यहाँ पे 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स हैं और रोमन कैथलिक्स भी शामिल हैं। यहाँ पे आपको एक इम्तिज़ाज मिलेगा ऑफ ओल्ड ऑटोमन बिल्डिंग्स और मॉडर्न भी है और मगर ये बॉस्निया जो है इज़ वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। सो बट इंडिया पाकिस्तान से फिर भी इट्स वेरी वेल मगर आई लव है। हमने रात में थोड़ा उस तरफ गए थे, ये पीछे की साइड पे आपको किला नज़र आ रहा है एक छोटा सा। देयर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन इट, इट्स कॉल्ड मोस्टार। सो इन दिस इट्स a very little old Ottoman style of houses and buildings here, and जगह जगह आपको restaurants, cafes, bars सब कुछ मिलेगा। और अब हम आपको लेके चलते हैं मोस्टार ब्रिज की तरफ। नहीं, मोस्टार ब्रिज की तरफ नहीं, that's I'm lying there. We're going for breakfast, right? And this is where we are. There's a mosque. So we are at this place and that is a nash that we are expecting of the restaurant. Oh, I'll show you a sneak peek of the Mostar bridge here. The picture of the Mostar bridge, and we'll be sitting here. And there's our breakfast. Is an egg. How many eggs are we gonna have? They have the omelette eggs, they have the fried eggs, and then they have the boiled eggs, and the chai. Chai should be unlimited, or what do you call it? Top bottomless. Oh, why is it fizzing? Guys, that is the other side of the river where we've come from, and a beautiful mosque there, and the river is there, and we are walking towards the bridge now, which is just going to be behind that old round castle type thing. And there's another mosque. Oh guys, there's azan happening. पहले मैंने कल नहीं अजान सुनी, मगर कल हम इस वक्त इस एरिया में थे भी नहीं। Oh, look at the little upgrade I had. I got a microphone. So I hope कि अब आवाज़ ज़्यादा बेहतर आएगी. I'm walking towards the mosque. I'm not quite sure. बहुत धीमी आवाज़ है, बहुत ही कम आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। So मुझे लगता है उस मस्जिद से आ रही है। इसी के मीनार के ऊपर हम गए थे, वो ऊपर तक मैं गई थी और वो यूँ लगता था जैसे ना मैं पर अल्लाह। Okay guys, we are at this little stall. Look at these books. 365 I think everyday Islamic stories, Islamic। सबसे मज़े की मुझे ये वाली लगी है। मुझे याद है कि ये हमने ना
उज़्बेकिस्तान में देख रहे थे। इनको ना वो अपना नेशनल हीरो समझते हैं, कहते हैं कि वो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, नसरुद्दीन होजा। इन पाकिस्तान वी नो हिम एज नसरुद्दीन के लतीफ़े, इफ़ आई एम करेक्ट, कि ही इज़ लाइक अ मिस्टर बीन ऑफ द सेंट्रल एशियन और एशियन कंट्रीज़। आई एम नॉट क्वाइट श्योर इंडिया में लोग उसको जानते हैं, टर्की में अगर जानते हैं, क्योंकि टर्की में मैंने इनको कभी नहीं देखा, और बाकी मुसलमान अरब मुल्कों वगैरह में इनको जाना जाता है कि नहीं, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे देखा है। एंड आई एम अस्यूमिंग दैट वाज इन देयर बॉस्नियन लैंग्वेज, सो ये भी उनको पहचानते हैं। और मुझे ये नहीं पता आजकल के पाकिस्तानी बच्चे क्या उन्होंने इनके बारे में सुना है, क्या इनकी कोई कहानियाँ आप लोग पढ़ते हैं? प्लीज़ इफ़ यू डू, please do comment in the section below. We are back into the more touristy area. Oh, little market. Yeah, let's see what we find here. Again, it's the sherbets, what do we call them, cordials, the fruits, vegetables, the figs. I'm more interested in figs here than anything. The Beza Faris, what shoes would you like? Look at that. All Nikes for 20 euros. ये शरबत, जाम, चटनियाँ, यहाँ पे सारा कुछ इनके ऑर्गेनिक फलों से बनता है। इनके यहाँ पे फिग और अंगूर काफ़ी पाया जाता है। Here is a Turkish tea shop, what we usually see in Turkey. यहाँ पे ना छोटी सी टर्क्स की आबादी भी है। So जो मुसलमान हैं, they are not Turks anymore, they are Bosnian Muslims, मगर वैसे तुर्की से में भी टर्क्स आके यहाँ पे आबाद हुए हैं। They are Turks. So yes, ये देखें, there's that bullet. हाँ, जैसे इन्होंने वो बुलेट्स बनाए हुए ना जो जंग की निशानी के तौर पे, लेट्स सी। और ये ना एक्चुअली पेन्स है विद मोस्टार ऑन इट। ये सारा कुछ टर्की का। ये देखें, ये मेरी टर्किश ज्वेलरी जो है, मगर दैट चीपर वर्जन ऑफ दैट, जो check that leather bag out with Mostar bridge on. वही दुकानें लग रही हैं सारी आपको टर्की में जैसी मिलती हैं आप। इवन के स्पेन में कोटोबा में इसकी इतनी वो नहीं थी, मगर थी। एंड ग्रेनाडा, ये देखें, इफ़ यू नो इट यू नो इट। These are the silk scarves, very nice. Thank you very much for watching, and do not forget to subscribe and hit the bell icon so you could be notified every time we upload a new video. Thank you. Bye.